everyone, so let's move towards our today's topic, which is Our today's topic is skull. Now, skull is like you can say that skull is the skeleton of head. That means कि जो head है हमारा जो सर है उसका skeleton कहलाता है skull. Okay. Now, majority of the books, the skull can be divided into two parts: skull cap and the facial skeleton. Okay, skull क्या है, मैं आपको दोबारा एक ओवरव्यू दे दूँ. जो पूरा का पूरा आपका जिसे आप अगर मैं फ्रैंकली बोलूँ तो जिसे आप कहते हो मुंह है, सर है, यानी गले के, गर्दन के ऊपर, नेक रीजन के ऊपर जो आपका पूरा वो एरिया है उसे हम कहते हैं स्कल, जिसमें नोज, आईज, माउथ. ठीक है, अगर मैं इनसाइड बात करूँ तो ब्रेन, मेनिंजेस, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये सब आ गए. तो इस पूरे के पूरे स्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. दैट इज़ अपर पार्ट, दैट इज़ स्कल कैप, और इन अदर वर्ड्स यू कैन ऑल्सो से दैट न्यूरोक्रेनियम, एंड द अदर पार्ट इज़ विस्रोक्रेनियम, दैट इज़ फेशियल स्केलेटन. ठीक है, जो आपका फेस है आगे की साइड जिसे आप कह सकते हो, जिसमें नोज़ है, आइज़ है, वो एक अलग एरिया है. और जो ऊपर का एरिया है जिसमें जहाँ पर आपके बाल होते हैं, जहाँ पे आप कंघी घुमाते हो ताकि आप बाल बना सको, उस एरिया को अलग डिवाइड किया गया है. तो बेसिकली देयर आर टू पार्ट्स, दैट इज स्कल कैप विच इज ऑल्सो नोन एज कैलवेरिया और न्यूरोक्रेनियम, एंड द अदर पार्ट इज facial skeleton which is also known as visceral cranium or viscerocranium. Okay, now we will talk about bones. Okay, so in this video we are going to talk about the introduction of the skull. Then what are the further division we will talk in the next video, inshallah. Now the bones which are forming the skull cap or neurocranium are total 14 bones. Okay, and to remember the name of those bones there is a shortcut, there is a mnemonic, that is best of cranium. बहुत सारे लोग कहते हैं बेस्ट ऑफ क्रेनियम, बेस्ट ऑफ फला, बेस्ट ऑफ फला. So in this mnemonic you have to remember best of cranium. In the beginning, instead of B, you have to write P. ठीक है. Now, what is this shortcut? Best of cranium. So, cranium का मतलब है कि ये cranium की bones है, क्योंकि हम इस mnemonic में इस टोटल जो 14 bones हैं उसमें cranium की भी bones हैं प्लस कान यानी ear. There are total 2 ears in our body. So उन कानों की यानी एयर की भी जो बोन्स है वो भी प्रेजेंट है. लेकिन ये जो बेस्ट ऑफ क्रेनियम वाला शॉर्टकट है, एज द निमोनिक इंडिकेट्स द वर्ड क्रेनियम, दैट मीन्स दिस निमोनिक इज फॉर क्रेनियम बोन्स. ओके, नाउ हाउ विल यू रिमेंबर द क्रेनियम बोन्स? बेस्ट ऑफ क्रेनियम, बेस्ट के पी से आएगा पैराइटल बोन, बेस्ट के ई से आएगा इथमोइड बोन, पेस्ट के एस से आएगा स्फीनोइड बोन, पेस्ट के टी से आएगा टेम्पोरल बोन. ओके, नाउ पेस्ट ऑफ के ओ से आएगा ऑक्सीपिटल बोन, एंड ऑफ के एफ से आएगा फ्रंटल बोन. नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ क्रेनियम? द क्रेनियम वर्ड इज इंडिकेटिंग दैट द पेस्ट ऑफ, द सीक्वेंस ऑफ पेस्ट ऑफ इज द shortcut, or it is a mnemonic to remember the bones of the cranium. Okay, so pest of cranium में pest of के mnemonic आपको याद रखने हैं, और cranium का मतलब ये है कि ये cranium की bones का shortcut है. Now कान यानी ear में कौन कौन सी bones है? As you know there are total 2 ears in our body. So the bones which I am telling you, there are 3 bones. So these 3 bones are present on each these 3 bones are present in each of the ear on each side of our skull.
हमारे 2 कान हैं, दोनों कानों में 3-3 बोन्स होंगी और 2-2 बोन, ये तीनों बोन्स 2-2 मतलब पेयर्ड फॉर्म में है हमारी बॉडी में. दैट इज मेलियस बोन, इंकस बोन एंड स्टेप्स बोन. Remember this point, that stapes bone is the shortest bone of our body. Okay, in our whole body the shortest bone is stapes, which is present in the ear, and stapes, incus and malleus, these three are present in in each ear of our body. So total there are 6 bones. कैसे? मेलियस 2 बोन्स हैं हमारी बॉडी में क्योंकि 2 कान हैं हमारे, इंकस 2 होंगे क्योंकि 2 कान हैं, और स्टेप्स 2 होंगे हमारी बॉडी में क्यों? क्योंकि 2 कान हैं और हर कान में एक एक मौजूद होंगे, ऑब्वियसली बात है. सो नाउ द अदर पार्ट ऑफ द स्कल, दैट इज फेशियल स्केलेटन और विसरोक्रेनियम. सो दैट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 14 बोन्स, but for that you have to remember another mnemonic, that is PM. PM, as you know, Prime Minister. PM ने ज़्यादा कोला मंगा ली, आगे लिख देना आपने वॉमिट. आई एम रिपीटिंग अगेन, PM ने ज़्यादा कोक मंगा ली वॉमिट. ठीक है, PM ने ज़्यादा कोक मंगा ली वॉमिट. दिस mnemonic is also present in the book Easy Medical volume 2, so you can write it from there as well. Now from PM, PM के P से पैलेटाइन बोन, PM के M से मैक्सिला बोन, PM ने से नेजल बोन, PM ने ज़्यादा के Z से जाइगोमेटिक बोन, PM ने ज़्यादा कोक के C से कॉन्का बोन, मंगा के M से मैंडिबल बोन, एंड मंगा ली के L से लैक्रिमल बोन, एंड वॉमिट के V से वोमर बोन. ओके, सो दीज आर टोटल 14 बोन्स. ऑब्वियसली इनमें से कुछ अनपेयर्ड हैं, और वो कौन सी हैं? मैंडिबल बोन और वोमर बोन. दीज आर 1 in number in our body, and the remaining, that is palatine, maxilla, nasal, zygomatic, concha and lacrimal bone, are 2 in our body. So they are you can also say that they are paired in numbers. So total there are, when you count these all, you will find that there are 14 bones in our face. Now skull also consists of some pneumatic bones. What are pneumatic bones? Pneumatic bones are the air filled bones. Why they are present in our skull? To reduce the weight of the skull, as well as to give the resonance to the voice. Now how you can say that this is the anatomical position of skull? You have to know that. So there are 2 plane, okay, 2 horizontal plane which are indicating that this is the anatomical position of the skull. How? There are 2 planes. One is Frankfurt's plane, and another is Reed's base plane. First of all, Frankfurt's plane. So Frankfurt's plane is from infraorbital margin. Now what is infraorbital margin? As you know, our eyes are present in orbits. ठीक है, जब आप हम स्कल को देखेंगे तो स्कल में एंटीरियर फ्रंट साइड पर, जहाँ पर फेस है आपकी नोज़, और नोज़ के साइड पर 2 होल होंगे. ठीक है, दोज होल्स आर नोन एज ऑर्बिट. ओके, एंड इन दैट ऑर्बिट आईज आर प्रेजेंट. ओके, नाउ the lower part of that orbit is known as infraorbital margin. So from infraorbital margin till the center of the external acoustic meatus. What is external acoustic meatus? Basically it is the air canal, or you can also say that yes, it is the air canal which is connecting the external air. जो कान आप हाथ लगाते हैं बाहर की तरफ, आपके बाहर इसका कान निकले हुए हैं, ये एक्सटर्नल एयर है. तो एक्सटर्नल एयर को टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जो कि आपकी
अंदर एक ड्रम होता है जिसे एयर ड्रम कहते हैं, जहाँ पे साउंड की वाइब्रेशन होती है, जिसे आप कान, उर्दू में कह सकते हैं कान का पर्दा। अगर किसी का वो फट जाए या किसी का एयर ड्रम डैमेज हो जाए, सो दैट यू कैन से दैट एयर विल बी डेफ एंड द पर्सन कैन बी डेफ। अगर दोनों कान के पर्दे फट जाए, यानी दोनों एयर ड्रम्स आपके डैमेज हो गए, so you can be deaf. So it's a very critical situation. So ear drum से external air जो connect होती है वो एक canal के through होती है, and that is known as external acoustic canal, which is present in the temporal bone. Now, so from the infraorbital margin till the center of the external acoustic membrane, there is a plane that is called as Frankfurt plane, and this plane will help you in identifying the anatomical position of the skull. Now, another plane, that is Reed's base plane. It is also the horizontal plane which is joining the infraorbital margin to the the Frankfurt plane is joining the infraorbital margin to the upper margin of the external acoustic membrane. Okay, not the center. If you say that infraorbital margin is joining with the center of the external acoustic meters, that will be Reed's base plane. Okay, so Reed's base plane क्या है? center of the external acoustic meters से को join करता है, ठीक है, इंफ्राऑर्बिटल मार्जिन को। लेकिन अगर इंफ्राऑर्बिटल मार्जिन से अपर मार्जिन ऑफ द एक्सटर्नल एक्यूस्टिक मेम्ब्रेन, एक्सटर्नल एक्यूस्टिक मीटर्स ज्वाइन हो रहा है, सो दैट मीन्स इट इज फ्रैंकफर्ट प्लेन। सो दिस वॉज द होल इंट्रोडक्शन ऑफ द स्कल। नाउ यू हैव टू ऑल्सो know that what are the fossas in the skull, inside the skull, that is anterior, posterior, middle cranial fossa, and that are present in on our channel as well. Those lectures are present and you have to listen that, ठीक है, कि anterior में क्या है, कौन सी bones हैं, middle में कौन सी bones हैं, posterior cranial fossa में कौन सी bones हैं. Then obviously also there are some other lectures as well, that is norma vertalis, norma basalis, norma frontalis. ये सब क्या होते हैं? ऑब्वियसली स्कल को एक्सटर्नली डिवाइड किया गया है, तो हर पार्ट को अलग अलग आपके लेक्चर रिकॉर्ड हो चुके हैं, वीडियो में मौजूद हैं, चैनल पे मौजूद हैं वो वीडियोस, सो यू कैन लिसन दैट एज वेल. सो टिल देन, good luck, work hard, study hard, and good luck, take care, bye.